30 मई 2019। और आज मैं जिन जो यहाँ पर आई है घूमने के लिए, उनको आज मैं चर्च गेट दिखाने जा रहा हूँ। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मैं उन्हें 1-2 जगह दिखा चुका हूँ, लेकिन आज मेरा प्लान है कि इनको गेटवे ऑफ इंडिया दिखाऊँ। और ये भी काफ़ी एक्साइटेड है, तो बस आज वहीं पर जा रहे हैं गेटवे, और आपको भी दिखा दूँगा साथ ही साथ। और ये यहाँ का फेमस ओवल मैदान, ये बेसिकली एक ग्राउंड है जहाँ पर बहुत से लोग क्रिकेट खेलने आते हैं। और जो पीछे आप गॉथिक स्टाइल वाली टावर देख रहे हो वो है राजाबाई क्लॉक टावर। इसकी जो हाइट है वो 85 मीटर, और 2018 में इस टावर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी डाला गया है। और मेरे राइट साइड में है बॉम्बे हाई कोर्ट। और फाइनली जीन ने इंडियन बर्गर यानी कि मुंबई का फेमस वड़ा पाव भी टेस्ट किया, जो उनको काफ़ी पसंद आया। अगर आप चर्च गेट से गेटवे ऑफ इंडिया बाय वॉकिंग जा रहे हो तो आपको 15 to 20 मिनट्स तो लग ही जाएगी। और ये है छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये है द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया के पास में एक ग्लास टेबल है जिस पर आप पूरा हिस्ट्री देख सकते हो, गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ गेटवे ऑफ इंडिया के वॉल पर भी लिखा हुआ है। अभी आए गेटवे ऑफ इंडिया के पास, अभी इन्हीं के साथ घूम रहा हूँ मैं, और अभी इन्हें थोड़ा जगह भी दिखा रहा हूँ मैं। तो ये यहीं पर है, ये देखिए। और ये है ताजमहल पैलेस, जिसका कंस्ट्रक्शन 1898 को शुरू हुआ था और फाइनली 16 दिसंबर 1902 को लोगों के लिए ओपन हो गया था। और उसके राइट साइड में ताजमहल टावर है जो कि 1973 में बिल्ड हुआ था। यहाँ पर थोड़ी तस्वीरें खींचकर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर हम निकल गए एलिफेंटा केव्स के लिए।
गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स जाने के लिए जो फेरी का टिकट है वो है एडल्ट्स के लिए 120 रुपीज़ और बच्चों के लिए 85 रुपीज़। फाइनली एलिफेंटा की राइड के लिए निकल चुके हैं हम। तो अभी आपसे ट्रेन पकड़े हुए हैं, मिनी टॉय ट्रेन है। 1 किलोमीटर का सफ़र है और एक जन का 10 रुपया लेते हैं। 2 जन हैं, 2 लोग हैं, 2 लोगों का 20 रुपया रिटर्न है। तो बस 1 किलोमीटर की राइड है। फ्रेंड्स, एक बात आपको बता दूं कि एलिफेंटा केव्स में सभी चीज़ें महंगी मिलती है। यहाँ तक कि पानी भी यहाँ पर काफ़ी महंगा मिलता है। जो 20 रुपये की बोतल है वो भी आपको यहाँ पर 50 रुपये की मिलती है। तो अब जब भी एलिफेंटा केव्स जाने का प्लान करोगे तो एक पानी की बोतल ज़रूर कैरी कर लेना। एलिफेंटा केव्स मंडे को बंद रहता है, तो ट्यूसडे से संडे के बीच में आप कभी भी आ सकते हो।